dear students, myself Gangadhar Solanke, and I welcome you all to the MCGM's virtual classroom. My dear students, today's our subject is history, and we all know that in our 7th standards history, we are studying about medieval Indian history, and in that, in the first term, we people have learnt about the sources of history, then the India before the times of Shivaji Maharaj, religious synthesis, and in that we learned how the Varkari Sampradaya and other sons laid foundation for the formation of the Swaraj or for the foundation of the Swaraj. Then Maharashtra before the times of Shivaji Maharaj, the foundation of the Swaraj, how Shivaji Maharaj laid the foundation of the Swaraj with the companions, with the friends of him, and under the guidance of Shahaji Raje and Jizabai. Then conflicts with the Mughals, and now today we'll be learning the topic the administration of the Swaraj. So in this topic we are going to study about the angles of the administration, but before that we'll just try to understand the concept of the administration or the meaning of the word administration. It is the process or activity. It is the process or activity of running a business or the management of public affairs or of government. Now, if we talk about the medieval period, then the administration of the kings and their kingdoms we're talking. But when in today's time we take the word administration, then it is related with the government or the other management companies. जैसे हमारा गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलता है, कौन कौन से ऑफिसर्स है और वो किस तरह से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं. फॉर एग्जांपल लीडर्स जो होते हैं जो गवर्नमेंट में है वो डिसीजन देने का काम करते हैं, एंड टू इम्प्लीमेंट that is the work of the officers, is the work of the government employees, and that is called administration. So here also we are going to talk about the administration of the Swaraj, how Shivaji Maharaj started administrating the Swaraj and how he built an administration different than the other kingdoms of that period. Now we people have already learned that Shivaji Maharaj founded Swaraj. He had himself crowned, and after the coronation, Maharaj accomplished Dakshin Digvijay, the conquest of the south. The Swaraj expanded, comprising large areas of Nashik, Pune, Satara, Sangli, Kolhapur, Sindhudurg, Ratnagiri, Raigad, and Thane districts of Maharashtra. So this was the region we can say, or the area under the Swaraj. It also included parts of Andhra Pradesh and Tamil Nadu states, not only in Maharashtra but the parts of Andhra Pradesh and Tamil Nadu states. To ensure the smooth management of the affairs of the Swaraj and ensure people's welfare, Shivaji Maharaj set up an efficient administration. Now here the question is, why एडमिनिस्ट्रेशन? टू इंश्योर द स्मूथ मैनेजमेंट. जैसे रत्नागिरी में कुछ टेरिटरी है जो शिवाजी महाराज ने जीत ली, या फिर तमिलनाडु में है, या फिर आंध्र प्रदेश में है, लेकिन शिवाजी महाराज तो वहाँ पर रहने नहीं वाले हैं. वो और कहीं जाएंगे और किसी किले पर जाएंगे, कहीं और लड़ने के लिए जाएंगे. तो वहाँ से जाने के बाद वहाँ का जो टेरिटरी है उसे देखने के लिए लोगों को अपॉइंट करना, और वहाँ के लोगों के अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो उन्हें सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए. दैट इज व्हाट ही इस्टेब्लिश्ड टू इंश्योर द स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्वराज and to ensure people's welfare. Shivaji Maharaj set up an efficient administration. Now here are the points which we are going to cover in this topic. Ashtapradhan Mandal, the policy regarding agriculture, encouragement to trade, the military organization, forts and navy. Now one by one we'll try to understand these, and here the first picture of the Ashtapradhan Mandal. Now it is in the name only. Ashtapradhan means ऐसा एक काउंसिल ऑफ
मिनिस्टर्स हुआ करता था जिसमें 8 मिनिस्टर्स होते थे और इसीलिए उसे अष्ट प्रधान मंडल कहा जाता था। ये जो अष्ट वर्ड है उसे 8 नंबर के तहत लिया जाता है इन द मराठी लैंग्वेज। सो अष्ट प्रधान mandal, council of 8 ministers. Here you can see Shivaji Maharaj sitting at the center and then the 8 ministers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Today also in our government, in the state government, in the central government, number of ministers are there of different subjects, we can say. For example, educational minister, then the health minister, then uh, welfare, child and women's welfare minister. Number of ministers are there in the government to run the administration smoothly and to solve the problems of the common people. So here also Shivaji Maharaj started council of 8 ministers. At the time of his coronation, Shivaji Maharaj appointed a council of 8 ministers. The administration was divided into 8 departments. Now, why 8 ministers? To divide the workload into 8 departments. ऐसा नहीं कि एक ही मिनिस्टर अलग अलग काम देखेगा तो शायद हो सकता है उस पर लोड आएगा या फिर काम उतना एफिशिएंट नहीं होगा उतना जितना होना चाहिए. टू सॉल्व दिस, शिवाजी महाराज डिवाइडेड the work into departments or divided the subjects into department. The administration was divided into 8 departments. A head was appointed for each department and these 8 heads of department constituted the Ashtapradhan Mandal. A minister was appointed at the head of every department. हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड हुआ करता था and that was the minister in the council of 8 ministers. Maharaj alone had the power to appoint a minister or to remove from his position. There were 8 such ministers. This was the Ashtapradhan Mandal and the ministers were answerable to Maharaj for the administration of their respective departments. Now here one more thing which is very important. महाराज अलोन हैड द पावर टू अपॉइंट अ मिनिस्टर. शिवाजी महाराज के पास ही पावर था किसी मिनिस्टर को अपॉइंट करना है या किसी ने अच्छा काम नहीं किया है तो उसे उसकी जगह से रिमूव करने का या फिर वो जगह किसी और को देने की. द मिनिस्टर्स वर आंसरेबल टू महाराज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव department. If Shivaji Maharaj want to inquire something or to know something about any particular department, then each and every minister was answerable to Maharaj. Shivaji Maharaj selected the council on the basis of their merit and achievements. He did not give them jagirs, watans, or gifts or fiefs. They were paid handsome salaries instead. Now today, we people are having salary system like working for some government or for in any company or in any private job, but the things are in cash में payment होता है. The same thing was there in the medieval period where Shivaji Maharaj started in the Swaraj. If we compare this with the other kings or with the other kingdoms, then there was the system of giving jagirs, watans or gifts. कोई सरदार अगर कहीं पर बड़ी लड़ाई जीत जाता है या फिर मिनिस्टर्स है उनको जागीर दी जाती थी, वतन दिए जाते थे. लेकिन उससे क्या होता था, उस पर्टिकुलर किंग का कंट्रोल नहीं होने की वजह से ये लोगों से ज़्यादा पैसा लेते थे, ज़्यादा वसूली करते थे और इससे क्या होता था, लोगों का नुकसान होता था. सो शिवाजी महाराज स्टॉप्ड गिविंग जागीर्स, वतन्स और गिफ्ट्स. ही स्टार्टेड सैलरीज इन कैश and that was the very important thing. One more important thing, Shivaji Maharaj selected the council on the basis of their merit, on the basis of their achievements. किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर को वो जगह दी गई है क्योंकि उसका उतना मेरिट है या फिर उसकी उतनी अचीवमेंट्स है. ऐसा नहीं कि वो उनका खास है, दोस्त है, पहचान वाला है, रिलेटिव है. नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दिस, शिवाजी महाराज selected the council on the basis of their merit and achievements. Very important one. Now the next point, here you can see the image which is in our textbook also. Ashtapradhan Mandal of Shivaji Maharaj. 8 ministers are there. Moro Trimbak Pengre,
Pradhan, his designation and the work, running the administration and making arrangements for the conquered territories. जैसे जैसे आगे जीतते जीतते जा रहे कोई भी पर्टिकुलर टेरिटरी तो उसके लिए अरेंजमेंट्स करना ये काम मोरो त्रिम्बक पिंगले इनका था जो प्रधान थे इन अष्ट प्रधान मंडल. देन रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार अमात्य, कीपिंग द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट, अकाउंट रखने का काम रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार का था. देन अन्नाजी दत्तो सचिव, प्रिपेयरिंग रॉयल एडिक्ट्स. Different royal edicts of different period are there, and also which are we can use as a sources of history or as a source of history to know many things about that particular period, about that particular king or about that particular kingdom. Then Dattaji Trimbak Waknis, Mantri of Correspondence. Hambirrao Mohite, Senapati, Organization of the Army and Protection of the Kingdom. ये काम होता था सेनापति का, आर्मी को ऑर्गेनाइज करना और किंगडम का प्रोटेक्शन. रामचंद्र त्रिम्बक डबीर, सुमंत, फॉरेन रिलेशंस. टुडे आल्सो वी आर हैविंग फॉरेन अफेयर मिनिस्टर. आज भी अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में भी और हर एक देश में फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स होते हैं जो अपने देश का बाकी देशों के साथ जो रिलेशन है उसे मेंटेन रखते हैं. कुछ लेन देन अगर होता है तो वो काम उनका होता है. निराजी राव जी, न्यायाधीश, डिस्पेंसिंग justice. And the last one, Moreshwar Pandit Rao, looking after religious matters. So these were the 8 ministers in the council of 8 ministers or in Ashtra Pradhan Mandal. Now you people can do one thing, you can find out the foreign ministers of our country. जैसे आप गूगल सर्च करते हैं या फिर किसी से पूछ सकते हैं. Then here it is सेनापति, so you can go for द होम मिनिस्टर्स. ये जो अलग अलग मिनिस्टर हैं उनके नाम आप ढूंढकर लिख सकते हैं एज फॉर द जनरल नॉलेज. नाउ द नेक्स्ट वन, पॉलिसी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर. नाउ एट दैट टाइम एग्रीकल्चर वाज द इम्पॉर्टेंट बिजनेस ऑफ द पीपल. जैसे आज अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग फैक्ट्रीज है, अलग अलग जॉब्स है, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था. पीपल वर डिपेंड ऑन द agriculture and it was very important to look after them and to look after the agriculture. So the policy regarding agriculture was very famous of Shivaji Maharaj. Agriculture was the main occupation in villages. Maharaj knew the importance of the welfare of farmers, क्योंकि फार्मर्स की तरफ अगर देखा जाएगा, उनकी वेलफेयर की तरफ देखा जाएगा, तभी रेवेन्यू जो है वो स्वराज में आने वाला था. एंड स्वराज स्टार्ट ही इसलिए हुआ था कि इन लोगों को अच्छे और चीज़ें देखने को मिले. महाराज पेड अटेंशन टू द वेलफेयर ऑफ द पीजेंट्स. ही इंटरेस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी of organizing the land revenue system to his capable and experienced officer Annaji Datto. Before that, before Shivaji Maharaj, ये जो फार्मर्स थे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू लिया जाता था. अगर खेत में क्रॉप्स नहीं आए हैं या फिर बारिश नहीं होती है, सूखा होता था, अकाल होता था, तो भी उनसे उतना पैसा लिया जाता था या फिर कभी कभी ज़्यादा भी लिया जाता था. बट शिवाजी महाराज स्टॉप्ड ऑल दीज थिंग्स एंड he entrusted the responsibility of organizing the land revenue system to his capable and experienced officer Annaji Datto. He warned the officers that they should not collect more revenue than the amount that was fixed. This one is the thing which makes him different than the other kings and than the other rulers. बाकी जगहों पर अगर देखा जाए, if we study about the middle Indian history, तो जितना डिसाइड किया गया है, जितना का अमाउंट फार्मर से लेना था, उससे कई ज़्यादा टैक्सेस जो है, उससे कई ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो फार्मर से लिया जाता था. बट शिवाजी महाराज वार्न द ऑफिसर्स दैट दे शुड नॉट कलेक्ट मोर रेवेन्यू दैन द अमाउंट दैट वाज फिक्स्ड. एंड नॉट ओनली दिस, बट ही encouraged peasants to bring uncultivated land under cultivation.
and if the crop was lost due to excessive rains or drought, or if any enemy army had devastated the area of the village, remissions were granted in land revenue and taxes. So this was again very big thing or relief for the farmers, we can say. Maharaj had instructed his officers to provide peasants with bullocks, plows, and good seeds for saving. So from the Swaraj, or the from the administrative people of the Swaraj, peasants were getting bullocks, plows, and good seeds so that they can take good crops. So this was the policy of the Shivaji Maharaj about agriculture, or regarding with the agriculture. But one thing we can definitely say, that the peasants in that particular period or in the Swaraj were very happy under the ruler period of Shivaji Maharaj. Then the next point, village economy of that period. How was the system? As we know, agriculture was the main or the important business. Agriculture was the backbone of the rural economy. The word which is very important here, क्या था? Agriculture was the backbone. सब कुछ उससे ही चलता था. In villages, many occupations developed to supplement agriculture. Artisans in the village produced goods and fulfilled the needs of the local people. So kind of interdependence was there. जैसे कारपेंटर डिपेंड्स ऑन बार्बर, बार्बर डिपेंड्स ऑन वाटर कैरियर, बोट डिपेंड्स ऑन शू मेकर, देन द ब्लैक स्मिथ, वॉशमैन, पॉटर, रोप मेकर, ये सारे अंदर ही अंदर एक दूसरे पे डिपेंड थे और एक सिस्टम थी विलेज में. Artisans in the village produced goods and fulfilled the needs of the local people. And in this sense, a village was a self-sufficient unit. उन्हें कुछ लेने के लिए, लाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था. जो चाहिए वो अंदर ही अंदर एक दूसरे से मिल जाता था. एंड दैट इज व्हाई इट इज गिवन हियर, अ विलेज वाज अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट. फार्मर्स गेव अ डेफिनेट शेयर फ्रॉम देयर प्रोड्यूस टू आर्टिसंस, क्योंकि उनसे भी वो चीज़ें लिया करते थे. तो जिनके पास खेती थी, जो खेती करते थे अपने क्रॉप में से, वो कुछ उन लोगों को देते थे जिनसे उनकी चीज़ें फुलफिल होती थी, या फिर उनसे कुछ चीज़ें वो लेते थे. एंड दिस शेयर वॉज कॉल्ड बलूत. फॉर एग्जाम्पल, बाल कटाने के लिए किसी के बार्बर के पास जाना पड़ता था और बार्बर के पास खेती नहीं है, तो जिन लोगों के पास खेती है वो बार्बर से अपने बाल कटवाते थे और अपने खेती में से जो भी उगता था अनाज वो उसे दे देते थे. सेम थिंग विद द शू मेकर. सो इट वॉज द सिस्टम, एंड दिस सिस्टम वॉज कॉल्ड बलूता. Next now, trade and business, or encouragement to trade. Now one by one, if you people minutely observe this, then you can understand that Shivaji Maharaj concentrated on each and every department very carefully. Whether it is about the farmers, whether it is about the trade, Maharaj knew that a kingdom does not prosper without an increase in trade. Kingdom doesn't prosper. कोई भी किंगडम बहुत बड़ा नहीं हो सकता, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आ सकता अगर वहाँ के ट्रेड को sorry, Maharaj knew that a kingdom doesn't prosper without an increase in trade. And that's why Shivaji Maharaj concentrated on the encouragement to trade. Merchants bring goods, not only goods, as also certain necessities into a kingdom. Goods become available in plenty, trade prospers, adding to wealth. So this is the relation. Today also we are having this, and in that period also, goods become available in plenty and trade prospers, adding to wealth to the kingdom. The view that Maharaj took of merchants is seen in the Ajna Patra, where merchants are described as follows. देखिए शिवाजी महाराज ने क्या लिखा है उनके बारे में.
मर्चेंट्स आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ द किंगडम, उन्हें ऑर्नामेंट्स कहा गया है, very valuable. Merchants are the ornaments of the kingdom and the glory of the king. By this statement, we can understand how he thinks about the trade and about the business. It was the policy of Maharaj to protect industries, and an excellent example of this is the salt industry. He protected salt industry in Konkan. Here you can see he charged how he protected the salt industry in the Konkan. At that time, traders imported salt from the Portuguese territory and sold in Swaraj. क्या होता था, जो ट्रेडर्स है वो सॉल्ट पोर्तुगीज टेरिटरी से लाते थे और स्वराज में बेचते थे, विच अफेक्टेड द लोकल ट्रेड इन कोकन एरियाज। तो कोकन में जो लोकल सॉल्ट बेचने वाले थे उन पर उसका इफेक्ट होता था। सो महाराज चार्ज हेवी ड्यूटी ऑन द सॉल्ट इंपोर्टेड इनटू द स्वराज फ्रॉम द पोर्चुगीज टेरिटरी। द इंटेंशन वाज, what was the intention behind that? The intention was that the salt imported from the Portuguese territory would then cost more, and as a result its import would decrease and the sale of the local salt would increase. So just think about the thought behind this and try to understand this. जैसे ट्रेडर्स है वो पोर्तुगीज टेरिटरी से सॉल्ट ला रहे, उसे बेच रहे, और उससे क्या हो रहा है कि जो लोकल के लोग हैं जो व्यापार कर रहे हैं सॉल्ट का, उस पर परिणाम होता था। तो शिवाजी महाराज ने क्या किया, जो बाहर से सॉल्ट आ रहा है उस पर हेवी ड्यूटी लगा दी, हेवी टैक्स लगाया, तो वो कम आने लगा या फिर वो महंगा हो गया। उसकी वजह से लोगों ने क्या किया, वहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स थे उनसे ही सॉल्ट खरीदना स्टार्ट किया, एंड दिस इज हाउ ही encouraged the trade in the Swaraj. Now the next point, the military organization, very unique and very special of that period, and that's why we can see कुछ भी नहीं होने के बावजूद शिवाजी महाराज ने अपना स्वराज खड़ा किया, अपने लोगों का स्वराज खड़ा किया। There were two main divisions of the army, Shivaji Maharaj, in the army of Shivaji Maharaj, infantry and the cavalry. Now one by one we'll try to understand what exactly was infantry and the cavalry. In the infantry there were officers such as Havaldar, Zumledar, etc. The chief of the infantry was called Sir Nobat, and he was the highest officer in the infantry. Here on the screen you can see a squad of 10 soldiers formed the smallest unit of infantry. इन्फेंट्री का जो स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ करता था उसमें 10 सोल्जर्स हुआ करते थे. इट वॉज कमांडेड बाय एन ऑफिसर कॉल्ड नाइक, और उन 10 लोगों में जो एक कमांडर है उसे नाइक कहा जाता था. हवलदार कमांडेड 5 नाइक्स, मीन्स 50 सोल्जर्स हो गए फिर हवलदार के पास. जुमलेदार कमांडेड 2 हवलदार्स 100. Hazari commanded Jumledars. Sir Nobat was the highest officer in the infantry. So this was how the system in the military organization of Shivaji Maharaj. Now the cavalry. Siledars had his own horses and weapons. बागिर्स प्रोवाइडेड विद हॉर्स एंड वेपन्स बाय द स्टेट. सिलेदार्स ऐसे लोग हुआ करते थे जिनके पास अपने खुद के घोड़े होते थे. बागिर्स जिनको स्वराज से ये सब दिया जाता था. इन द कैवलरी बागिर्स वर मोर इन द नंबर. द रैंक्स ऑफ द कैवलरी ऑफिसर्स वर सिमिलर टू दोज ऑफ द इन्फेंट्री ऑफिसर्स अबाउट विच जस्ट नाउ वी टॉक्ड. द हाइएस्ट ऑफिसर इन द कैवलरी वॉज द सर नौबत, सेम इन द इन्फेंट्री. नेताजी पालकर, प्रतापराव गुजर, हम्बीरराव मोहिते were Sir Nobats, famous Sir Nobats of the cavalry. Now the difference between the infantry and the cavalry, you can take the screenshot of this image and you can continue then. Next one,
Again, very important department of the Swaraj, intelligence department. Shivaji Maharaj worked hard, very hard for this. It was necessary to protect the Swaraj from its enemies, and for any kingdom, it was very necessary to protect its kingdom from the enemies. And for this, it was necessary to get precise and timely information. Not only precise, information should be on the time. टाइम पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो उसका फ़ायदा नहीं होता है. अगर कोई एनिमी स्वराज की तरफ चल के आ रहा है, वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन वो आया, उसने सब हमला भी कर दिया, जो जीतना था वो भी जीत लिया, तो उस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा नहीं है अगर वो टाइम पे नहीं मिली. सो इट वॉज नेसेसरी टू गेट प्रिसाइज एंड टाइमली इंफॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द enemy. It was the job of the intelligence department to obtain information about the movements of the enemies and submit it to the Maharaj. The intelligence service of Maharaj was very efficient, very efficient. And in this, Bahirji Naik was the head of the intelligence department. He was extremely skilled in his job, and number of stories of Bahirji Naik were there in the history, or generation to generation we are hearing here in Maharashtra, how he helped in building the Swaraj, or how he gave precise and timely information. Bahirji Naik was the head of the intelligence department. He was extremely skilled in his job. He collected accurate and detailed information, not only accurate but detailed information about सूरत before the raid on सूरत. तो बहुत सारी ऐसी रेड है जो शिवाजी महाराज ने की with the help of the information given by Bahirji Naik. So today, we people in this topic, administration of the Swaraj, learnt about Ashtapradhan Mandal, the policy regarding agriculture, village economy of that period, then trade and business, the military organizations in that infantry and cavalry, how it works, then intelligence department. Now in the second part of this topic, we'll talk about the forts, then sea forts, navy, and concern for the welfare of his subjects. Concern of the Shivaji Maharaj towards the welfare of his subjects. Please subscribe the channel and press bell icon to get notifications. So my dear ones, this is all for today. Thank you very much. Stay home, stay safe, take care.